So, कल हमने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लिया था, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या उसकी ज़रूरत होती है और क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. When we look at any particular nation, जब भी उसकी कोई फॉर्मेशन हुई, क्रिएशन हुआ, there has to be some set of norms, some principles, right, that the institutions that is to govern the nation must strictly adhere to, or they must know some starting point must be there, right. Constitution, it means basically to constitute, कुछ create करना. In today's class we have several terms that I would like to know if you know the meaning of the same. First is constitution, then we have constitutionalism, then you might have heard constitutional morality, then there is constitutional conventions, राइट. ये कुछ वर्ड्स हैं और इसके अलावा आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. If you are clear about these 5 terms, you are clear about the constitution itself. अगर ये पांचों टर्म आपको क्लियर है by heart, right? Because एक चीज समझना, when we read and try to study constitution, it's not a subject. It's a feeling. It's something that has created the very essence of India, right? So don't treat it just as a subject. It's just as a document, or just a hurdle for you to pass in order to pass your exam. You need to have that understanding of how it has been created. पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? It is a document or entity, it can be entity, it can be anything, that constitutes the state. That constitutes the state. Supreme grand norm or it being a grand norm is not necessary. अच्छा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या नेशन नहीं होगा? नेशन नहीं सर, नेशन को एक फॉर्मलाइज्ड बैकिंग देता है, लीगल बैकिंग देता है. जैसे आप मान लो पुराने जमाने में देखते राजा महाराजा हुआ करते थे, नेशन तो तब भी थे. बड़ी बड़े नेशन तो अब तो काफी बट चुके हैं, टूट चुके हैं, राइट. चलाते तो तब भी थे. गवर्निंग प्रिंसिपल्स वगैरह तो उनके भी कुछ नहीं थे, राइट, बट दे वर वर्किंग फाइन. लेकिन वहां पे एक चीज थी, दैट एवरीथिंग वाज विद रिगार्ड्स टू द किंग इटसेल्फ. जो किंग ने कह दिया, जो किंग ने डिसाइड कर दिया, दैट इज द लॉ, राइट. सो द रूल ऑफ मेन वाज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम. In that we can see that there were several things that went in an arbitrary manner, जिसकी वजह से जो people थे, the so-called people of India. I was actually listening to yesterday's session itself, and he raised one point. Okay, it was just 3% of the people, those who represented in that constituent assembly and created this beautiful document. My answer is that the birth is not in your control, but the growth is in your control. We need to focus on how it has developed over time, and is it able to achieve the aspirations of the 100% or not. It's not just the 3% who represented it at the very beginning. वो था जो था, बट किसी कंट्रोल में नहीं होती. How we are developing it. The constitution we have is transformative constitutionalism. क्या होता है ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब? What is transformative? Transform सिर्फ चेंज नहीं होता. To change according to the situation, according to the need, for a betterment, right? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बना के भी गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो बनाया था, उन्होंने इसको एक सॉलिड फॉर्म में नहीं छोड़ दिया, रिजिड फॉर्म में नहीं छोड़ दिया. They kept the possibility to alter it according to the requirement. कि अगर people of India need something else, they can create it accordingly. But there has to be again some set of principles and norms which any human being would want in the state, right, to be there, to protect their rights, to protect their human existence rights that we call fundamental rights. उस चीज के लिए we have adopted the basic structure doctrine as well over time. So when we read constitution, yes, it's the starting point of a nation, or maybe restarting point of a nation.
राइट? ऐसा नहीं है नेशन पहले नहीं होते थे इससे भी, या इसके बिना नहीं रह सकते, बट इस पॉइंट के बाद में वो नेशन एक आर्बिट्ररी मैनर में या फिर एक मैन के रूल में नहीं चलेगा, वो एक लॉ के रूल में चलेगा, नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स के रूल में चलेगा, राइट? इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाटसोएवर देयर मे बी। क्लियर है इतनी बात? कैन अ डिक्टेटरशिप हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन? Yes. Absolutely, they can create their own norms, they can create absolute power to the dictator, perfectly fine, right? Constitution तो है वो भी। When we read constitutionalism, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन आता है। लॉ तो क्रिएट कर रहे हैं, बट वो लॉ, यस प्लीज, लेकिन वो लॉ इस तरीके से हम क्रिएट करना चाहते हैं कि बार बार एक आर्बिट्ररी रूल ना बने किसी का, सारी जो पावर है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में किसी के पास में ना चली जाए, राइट? बिकॉज वी हैव हर्ड सो मच, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, राइट? सो इन दैट एसेंस व्हेन वी रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, 3 ऑर्गन्स बनाए, सुपर पावरफुल ऑर्गन्स। क्या क्या है? फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, राइट, टू क्रिएट लॉज। भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो ग्रैंड नॉर्म हो गया, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गई, उसके बाद हमारे बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी हमारी एस्पिरेशंस हैं, सोशल फैब्रिक है जो हमारा, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए वी रिक्वायर सेवरल लेजिस्लेशंस, राइट? वो पावर दी लेजिस्लेचर को, बनाओ व्हाटएवर इज द रिक्वायरमेंट, यू क्रिएट इट। फिर एग्जीक्यूटिव बनाया, क्या रोल दिया उसको? इम्प्लीमेंटेशन। भाई खुद थोड़ा ही वो लेजिस्लेचर बनाएगा भी, अब जा जाके देखेगा हाँ कर सकते नहीं कर सकते, क्या नीड है क्या नहीं है, राइट? तो वी क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव एज वेल। Then we created judiciary, क्या करने के लिए? Not just to interpret, not just to interpret, to check the legislature as well whether they are going beyond their powers. So ठीक है, not just legislature but also the executive as well as the judiciary. Judiciary was there because हमने चलो rights दे दिए, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स बना दिए हमने। भाई जब तक उनको एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, जब तक उनकी रियलाइजेशन नहीं कर पाओगे आप, तब तक क्या फायदा उसका होने का? सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड जुडिशरी एज वेल। सुप्रीम पावर तो दे दी उनको अब तीनों को, बट इट हैज टू बी, यू नो, इट हैज टू वर्क विद इन अ पर्टिकुलर बाउंड्री so that it does not become arbitrary, so that it does not start misusing its power, so that that institution or one of these institutions does not become supreme. That is why we tend towards constitutionalism, right? Yesterday इसी पे रुके थे ना, constitutionalism पे. What was the meaning of this ism? I think that was asked yesterday as well. An ideology, right? क्या ideology? Constitution की ideology क्या हो सकती है? Constitution की ideology Constitution beyond governance. Constitution beyond governance is, मतलब beyond the government है। भाई देखो Constitution में पावर दे दी हमने पहले, More supreme than वही है, law is more supreme, और मे बी जहां से भी डॉक्यूमेंट बना that becomes supreme, ठीक है? पावर दे रखी है सबको, तीनों को। Now they have to act in a certain manner. They have to act within the parameters of their powers, right? Limited government, limitations of power, check and balance. How they are going to interact with each other. How these institutions are going to interact with people. How they can behave with people. How they can control the people. What can they provide to the people, right? शुरू में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यही होता था. That was the very essence of constitutional limited government. It was based on this one objective, that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. तो उसको रोको. But यहाँ पे हम एक presumption लेते हैं कि जिनको हमने power दी, they are going to misuse it. So there was this person N.W. Barber. He went into the idea of constitutionalism, went through all the jurisprudence कि अच्छा ठीक है, सभी क्यों बोल रहे हैं कि negative है, negative constitutionalism. But we perceive now that is negative essence of constitutionalism. yes, Right? There is also a positive side that he tried to convey. Power दी है, तो पावर का मतलब सिर्फ मिसयूज नहीं होता, पावर का यूज भी होता है. द करेक्ट एप्ट एप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ पावर. 3 इंस्टीट्यूशंस है, उनका काम सिर्फ चेक एंड बैलेंस का नहीं है, कोऑर्डिनेशन का भी है, कोहेरेंस का भी है, सपोर्ट करने का भी है.
So he started talking in the sense of positive constitutionalism. That this constitution, yes, पावर दी गई है, राइट? उस पावर पे चेक भी होना जरूरी है, लेकिन उस पावर का इफेक्टिव यूज भी तो होना जरूरी है, so that it can be effectualized, whatever the objective was. जैसे आर्टिकल 21 देख लो, क्या है आर्टिकल 21 में? Right to life. No person shall be deprived of life without Due process. नहीं procedure. पर्सनल लिबर्टी भी थी सर. हाँ personal No person can be, no person's life or personal liberty can be curtailed except according to the procedure established by law. I believe, it's my personal belief, कि इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है सिर्फ. That is the only thing for which we have a constitution in the first place. It gives a negative thing, a negative aspect, a limitation on the power of the government. How? कि भाई अगर प्रोसीजर नहीं है, you cannot control any person's liberty, you cannot take away his life. अगर नहीं है एक प्रोसीजर, ठीक है, नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. पॉजिटिव क्या है इसमें? extend भी कर सकते हो क्या? कि सर अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर इंपीड कर सकता है, तो एक्सटेंड भी कर सकता है. यानी कि भैया किसी की लिबर्टी और लाइफ को बचाने के लिए स्टेट किसी हद तक जा भी सकता है. दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट? इफ अ पर्सन्स लिबर्टी इज एट स्टेक, the state will do everything in its power to idealize it, to provide that liberty to the person. देखते हैं ना, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, at times we have seen कि भैया रात के टाइम भी हो सकता है किसी प्रिविलेज इंसान के लिए, बट स्टिल रात के टाइम भी it opens its gate and provide bail and liberty to the people. कर रही है ना? That is also positive constitutionalism only. Then what is constitutional morality? सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज मतलब एक नेचुरल कॉन्सेप्ट जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स डिफाइंड है. ये सर डायरेक्टली इंडिया में फॉलो नहीं होती है, अब होने लगी. See, अब तक हमारा जो एस्पेक्ट था वो था सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का, राइट? अब तक हम समझ ही रहे थे. वी आर जस्ट डेवलपिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन. अभी 70-75 साल इतने नहीं हुए कुछ, ठीक है. धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि चलो ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन इज परफेक्टली फाइन, इट्स वर्किंग फाइन, इट्स प्रीमाइस इज वेरी सॉलिड. अलग अलग जगह से अपनी रिक्वायरमेंट को देख के हमने उसको अडॉप्ट किया है, क्रिएट किया है, सुई जनरस एक बनाया है. नाउ वी हैव टू स्ट्रिक्टली adhere to it as well, not just in the bare text, not just in the bare wordings, but the very objective, the very spirit that he has said, right? आर्टिकल 21 पे आओ वापस. क्या लिखा? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. बना दिया गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर टू कर्टेल लिबर्टी ऑफ द पीपल, एंड इट्स टोटली ऑन एब्सर्ड आर्बिट्ररी मैनर. रात के 10 बजे के बाद अगर घर के बाहर निकले, सीधा बंदूक से उड़ा दिया जाएगा. दिस इज अ प्रोसीजर, राइट? आपने सब कुछ बता दिया लोगों को. विल दिस प्रिवेल? बिकॉज इट इज नेवरदलेस नॉट फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 21. क्या करा हमने फिर? देन अगेन वी स्टार्टेड डेवलपिंग. देन केम द मनेका गांधी केस. वहां पे जुडिशरी ने जब इंटरप्रेट किया with regards to procedure established by law, that there is not just procedure, there has to be a due process which is just, fair and reasonable. अगर होगा तो कर लेंगे कर्टेल, और अगर जस्ट फेयर रीजनेबल प्रोसेस नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, तो नहीं कर रहेंगे. क्या हो रहा है वो? मोरालिटी. टू नो द एसेंस, to know the real meaning behind the particular words, particular essence, particular rights, limitations, powers, governance, relations between various institutions, right? Not just by the words, but by the spirit of the same, by the aim that we sought to achieve. That is constitutional morality. अभी सबरीमाला जजमेंट भी आया था, उसके बाद में I think नाज फाउंडेशन जजमेंट was also there. वहाँ पे भी we have talked about constitutional morality again and again. Article 25, अगर आप जब पढ़ेंगे राइट टू रिलीजन, वहां पे हम देखेंगे कि इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट मोरालिटी, राइट? व्हाट इज दैट मोरालिटी अगेन? होती क्या मोरालिटी? ये वर्ड का मतलब क्या है? नैतिकता. Morals are basically not to do what is decided by the society itself. What is right? What holds good in value? ठीक है. According to whom? Society. When we say constitutional morality, according to the constitution, what is the right thing to do under certain circumstance, right? So article 25 में we have read constitutional morality. उन्होंने इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने
It's not morality of the people or the religion or the being a secular nation. It's what the Constitution wanted to perceive through Article 25. That we have to achieve. Differentiate कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में, बिकॉज कई बार बच्चे ना ओवरलैप कर लेते हैं दोनों में. Constitutionalism is more of a procedural impediment on the government or an extension, but constitutional morality is the reflection of the spirit of constitution and the ideology of adhering to it no matter what the circumstances may be, चाहे कुछ भी हो, to adhere to the principles of the constitution. That is constitutional morality. अब आते हैं constitutional conventions पे. जो constitutional morality है, वो जो positive constitutionalism है, हाँ जी, वो दोनों से differentiate करना मुश्किल है. एक्चुअली नहीं है. पता है क्या, एक सिर्फ बाउंड्रीज बता रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले सपोज दिस इज अ डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने डॉक्यूमेंट में कुछ वर्डिंग्स एंड ऑल लिख दी, चलो राइट्स लिख दी, एस्पिरेशंस लिख दी, गोल्स लिख दिए, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी वो पूरी लिख दी यहाँ पे, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दिया. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अब बताता है कि किस पैरामीटर में, किस हद तक आप इस पे एक्ट करोगे. पैरामीटर सेट कर दिए, बाउंड्री सेट कर दी, ठीक है? चाहे उसमें अब आपको लिमिट कर रहे हो या पावर दे रहे हो. पावर देने की भी तो लिमिट है ना एक. सर ये अदर वे राउंड है ना सर. नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो रही है. इट इज मोर ऑफ लिमिटिंग द गवर्नमेंट. ठीक है. When we talk about positive constitutionalism, हाँ जी. then it is more of how and to what extent and how well it should be implemented so that the objective of the constitution can be achieved. ठीक है. Right. So when it comes to positive constitutionalism and constitutional morality, the only differentiate I can do is that constitutional morality is somewhat requires a interpretation by the Supreme Court in the affairs. देखो इसमें ना एक चीज का डिफरेंशिएशन है. This drags you somewhere. Constitutionalism drags you somewhere. Either it is trying to limit you or trying to push you, right? Constitutional morality is just telling you where you should stand. It's not trying to push you somewhere or limit you somewhere. It's not trying to limit the legislature or the executive or the judiciary to do something. Constitutionalism करता है. ये सर ये एक्टिव है वो पैसिव है. हाँ, absolutely, because it's a thought. It's a thought process. It's a morality. But the problem arises when we have to differentiate on the piece of paper. Don't worry. When we perceive constitutionalism, we always perceive it in the negative aspect. Can we say morality? That's why. Morality is the why of constitutionalism. Yeah, in one way, yes. हाँ जी. अभी constitutionalism negative होगा तो constitution morality could be a positive thing because constitution aid करता है कुछ अगर कुछ नहीं हो constitution के अंदर उसे support करने में and society का एक mindset दिखाने में वो help करता है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, true, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करता है. Because if we know constitutionalism in a positive way, only then we are able to understand constitutional morality in the first place. So it also helps us achieve the constitutional morality. It dictates the state to act in an active way when it is required to fulfill its powers, usage of its powers. तभी तो constitutional morality निकल के आएगी उसमें से. Constitutional convention का क्या काम है यहाँ? हमारे पास तो एक written constitution है और lengthiest in the world भी है. Then what is the requirement of having constitutional conventions? So no matter what, our document will be finite, and some things may be beyond its scope. So in that case, certain usages can be given the force of law. Right. अब जैसे मान लो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसमें कई सारी चीजें हैं that you will go through. उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसमें गवर्नेंस के बारे में बताया गया, उसमें 3 जो आपकी पिलर्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में बताया गया. ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, राइट? उसके बाद में कुछ चीजें होंगी जो मिस आउट हो जाती हैं, कुछ डिटेल्स होंगी जो नहीं प्रोवाइड कर पाता कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ रूल्स या फिर कुछ नॉर्म्स होंगे जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है. वेयर शुड वी गो देन? तब कहाँ जाए, राइट? सो आई वाज रीडिंग एमपी जैन यस्टरडे इटसेल्फ. उसमें था, देयर वाज दिस ब्यूटीफुल लाइन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन. इट सेड
constitutional conventions are the flesh to the bones of the constitution. It clothes them with the the adequate thing which is required to fulfill that gap which is left in the constitution. It supplements the constitution. It supplements the written aspect of the constitution. जो चीज मिसिंग रहती है वो ये फुलफिल करता है. और कुछ है इसके अलावा जो करता है? लेजिस्लेशंस हो गई आपकी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हो गई आपकी. ठीक है, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे. कन्वेंशन में एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि इट इज डेवलप्ड एंड इवॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड आल्सो प्रीएम्बल. ये तो सर वी कैन मतलब प्रीएम्बल तो है, देखो इट गोज बियॉन्ड द वर्डिंग्स. इट इज द नॉन लीगल नॉर्म्स. नॉन लीगल का मतलब देयर इज नो लीगल बैकिंग टू इट. कॉन्स्टिट्यूशन की एक लीगल बैकिंग है, लिखा है भैया डॉक्यूमेंट में, ला नहीं सकते आप. ठीक है, इसकी कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है, प्रैक्टिस. कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ओवर टाइम that has been accepted by the people of India, that is in strict adherence to the constitution as well. It does not go against the constitution. It can never go against the constitution. It will always supplement it. It will always help it in understanding, achieving its objective. वो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन. जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, कौन सा वर्ड बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. जब बात करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, इट इंक्लूड्स योर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, all the supplement laws and statutes which helps the constitution into its existence, all the judicial interpretations regarding the constitution. That is your constitutional law. But sir, I was reading sir's book. हाँ जी. That it was written that maybe I interpreted in the wrong way. But it was written that constitutional law is part of constitution which can be enforceable by court. Something like this. Interpreted by court. Which can be, मतलब it is the part of the constitution which can be which is bound to be implemented. हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल. That makes the other way around. That makes the constitution bigger and the constitutional law smaller. It still says the constitutional law is much wider in its all entirety. Reason being कि आप सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट पे नहीं रिलाई कर रहे हो. जो वो एस्पायर करता है उस चीज को आप अचीव करने के लिए, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव हियर, एंड यू कैन डू इट थ्रू योर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस और एनी अदर सप्लीमेंटल लॉ, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एटसेट्रा. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज मच वाइडर टर्म. लॉ का मीनिंग तो पता है ना, क्या होता है? Set of norms that regulates behavior of society. Have you heard about private law and public law? Yes. ये क्या होते हैं फिर? Rather the personal law. ठीक है, private law. दोनों ठीक है. Public law is that which is widely applicable on state and does not demarcate between two different entities. But private law may be subject to different entities and may not be. सिंपल बताओ, देखो इतना वो वाली 3 dates वाली डेफिनेशन नहीं चाहिए वो कुछ भी. सिंपल बताओ, कीप इट वेरी सिंपल. What is public law? For everyone, same for everyone. पब्लिक लॉ एट लार्ज अप्लाई होता है. प्राइवेट लॉ जो है वो पार्टी जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के हो या के हो. सर प्राइवेट लॉ कोई भी दो लोग बना सकते हैं. पब्लिक लॉ पूरी सोसाइटी से रिलेट करता है. प्राइवेट लॉ किसी दूसरे. ओके, कोई एग्जांपल? Public law means constitution or IPC. Private law is contract or maybe torts. देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है. When we say set of norms and principles and rules, whatever, when we talk about public law, it's the governance that is getting their norms and rules. The governance, how they are going to govern. Public law is about the governance itself.
it deals with three aspects. First is your constitution, then maybe administrative law, then you must have heard about public international law. बस ये तीन होता है. How that supreme power that is governing the entire country, how they can function, how they can behave, that is your public law. Private law में जो how these entities are going to interact, relate with the common people, how they can, limit them, provide them rights, how they can behave with each other, all that is covered under private law itself. तो clear हुआ थोड़ा ये differentiation. So CRPC private law. CRPC is a private law in this sense. Public private मतलब किस पर apply होगा? Public is state and हाँ. private. Norms and जो principles हैं constitution के किस पे होते हैं apply? It's not for people. It's for the one who will grant you your rights. ये वाला part है कोई अलग से. देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए हर चीज एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होती, ठीक है. Whatever is required for your exams is in your notes. ठीक है, बस अंडरस्टैंडिंग जरूरी है होनी इतनी. So when we read constitutionalism, हाँ जी. So constitutional law is equal to A plus B. So isn't all law constitutional law? As in All law of the land. all of the land, which includes like every type of Yes, because you said supplementary laws. supplementary, which supplements the constitution. Supplements the constitution means if the constitution is silent about They something. don't take legislations and as extensions of. नहीं, they are not. क्योंकि जो आपकी legislations है, for example IPC, CRPC, अब जो नए भी आ गए BNS and BNSS, they are governing the people. They are there for the supreme power to understand how they can govern the people at the end of the day. How people can behave. What are the parameters within which they can enjoy their freedom. उनके लिए. Then why is admin law not constitutional law? Because it also is granted power to it. It is not constitutional law. Yes. Because it is about the administration. Again, administration is someone who is being empowered. इसलिए वो भी public law में आता है. कि पब्लिक लॉ में आपने तीन एंटिटीज बताई. और मैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पब्लिक लॉ से रिलेट करना चाह रहा हूँ. Okay. हाँ है वो. एडमिन लॉ Yes, पार्ट ऑफ. it is a part of constitution law only. क्योंकि सप्लीमेंट करता है ना, वो एग्जीक्यूटिव को तो पूरा वही सप्लीमेंट कर रहा है ना. It is very much part of constitutional law. So constitution ought not merely to confer power. हाँ जी. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला नहीं है. मतलब ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा क्या क्या नहीं होगा. अच्छा चलो ठीक है. एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले. A country where there is no written constitution, can we say they do have constitutional law? Yes. अच्छा they do. Yes. कैसे? Every law passed by the legislature is a constitution. Every law which deals with the governance, which deals with the powers and functions of the government, all those laws dispersed हैं, फैले हुए हैं, एक जगह इकट्ठे नहीं है, right? But they do exist. साथ में क्या होंगे? कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स होंगे जो डेवलप हुए हैं काफी टाइम से. साथ में क्या होंगी? जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस होंगी, यूसेजेस, कन्वेंशंस होंगी. तो ऐसा नहीं है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं हो सकता. देयर कैन स्टिल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. बस फैला हुआ है एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, एक इकट्ठी जगह नहीं है कुछ भी. हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पहले एक. जिसमें हमने जितना हम कर सकते हैं सब चीजें कन्वे करने की कोशिश करी. ठीक है. इसके अलावा हमारी कन्वेंशन है, जो पार्ट था, वो जो फ्लैश था, जो ओपन रह गया था, राइट, उसको क्लोज किया गया, उसको भी फुलफिल किया गया यहां से. देन जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस आर देयर, जो जुडिशरी कन्वे करती है हाउ अ लॉ कैन, इफ फॉर एग्जांपल इट इज आर्बिट्ररी, if for example it is, I won't say arbitrary, but if it is ambiguous, right, जहां पे हार्मोनाइज करने की जरूरत है, फिर क्या करेंगे? मान लो दो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के ही,
and they feel they are contradictory to each other, then what? Where should we go? We go to the judiciary. They will try to harmonize them, right? Doctrine of harmonial constructions, that is developed in that way only. That is a part of constitutional law only. ठीक है? इसके अलावा और कोई supplementary law which again assists, that can be your administrative law, that can be your international law. जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर वे में समझाने की कोशिश कर सकता है, दैट ऑल दैट इज कवर्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. आर्टिकल 17 के तहत की abolition of indivisibility. हाँ जी, उसके बाद से उस पर्टिकुलर चीज को Yes. करने के लिए हमने अलग से स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस बनाई, राइट? आर्टिकल 17 का जो ये आइडिया था हमारा, आइडिया नहीं कहूंगा मैं, एस्पिरेशन कहूंगा, एक गोल था हमारा, उसको अचीव करने के लिए हमने अलग से स्टैट्यूट्स बनाए. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. क्योंकि आर्टिकल 17 नहीं समझ पाएंगे ना हम, अगर उन्हें नहीं पता होगी वो एस्पिरेशंस जब लेजिस्लेशन में डली तो किस तरह से उसका इफेक्ट हुआ. ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा. बहुत ज्यादा वाइड ही है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बहुत ज़्यादा वाइड. बिल्कुल है, इट इज एक्सट्रीमली वाइड. सर एक ऐसे लॉजिक से सर हम आईपीसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं. Some instances of IPC can be included. Even if you look at, for example, some provisions of constitution, they do overlap with CRPC. The principle of double jeopardy. उसी वही शायद मैं भी पूछ रहा था कि when everything is an aspiration of the country. Yes. जो aspect constitution को effectualize करता है, all that is within constitutional law. IPC तो करता है, so then why not all law is so? Any law which is not See, consistent. पूरा IPC नहीं करेगा, लेकिन सर यहाँ पे बट कुछ चीजें जो आईपीसी में हैं जो इसी बारे में कन्वे करती हैं, राइट? जैसे आईपीसी में क्या है, पनिशमेंट्स दे रखी हैं, इस तरह की पनिशमेंट है. अगर उसके अलावा कोई और पनिशमेंट दी, क्या हो जाएगा? दैट विल नॉट सस्टेन, बिकॉज आर्टिकल 21 को वो प्रिवेल नहीं कर पाएंगे कभी भी, राइट? बट सर जैसे यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि एनीथिंग व्हिच इज नॉट कंसिस्टेंट, एनी लॉ व्हिच इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी, दैट becomes unconstitutional. Yes, right. again that becomes a part of constitutional law only. That's the point. Anything which is not constitutional हाँ becomes unconstitutional. हाँ जी, Therefore, anything which is not constitutional law Is not law. is not law. नहीं ऐसा नहीं है, is not public law. There may be several private laws that may prevail in private nature. Contract है, sale of goods act है, commercial activity, negotiable instruments act है, right? They act within their domain to regulate the behavior of people with regards to those particular activities. ठीक है? They are there nevertheless. So constitutional law बहुत wider term है. And when we read constitutionalism, constitution ought not merely to confer powers on various organs, but also seek to restrain these powers. वही constitutionalism का idea था, जो philosophy थी, कि आप सिर्फ unbridled powers नहीं create कर सकते. It should also come with reasonable restrictions. अगर हमें fundamental rights भी दिए हैं, they all come with reasonable restrictions. Freedoms दिए हमें, fundamental freedoms under Article 19, they all are attached with reasonable restrictions. Same goes for the state. तीन लिस्ट बनाई हमने कन्वे किया that if the legislature is to act, you can act within these parameters. These are your domain. Do whatever you want, right? Make any legislation that you want, but within these domains, not outside them. उनसे बाहर जाओगे तो क्या हो जाएगा? Unconstitutional हो जाएगा, right? That is the basic meaning of constitutionalism. The very idea, the very essence of a limited government. And herein, the functions of government of a state must be in accordance with the provisions of the Constitution itself. It recognizes the need for government but insists upon limitations being placed upon the governmental powers. It is trust, belief, faith, etc. that it will never be misused. वही है ना? Absolute power should not be there because it will eventually going to be corrupt. And when it does, it fails to fulfill the objectives of the Constitution itself. It favors rule of law rather than rule of men, leading to the limitation of governance. सबसे पहला कौन सा डॉक्यूमेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को पोर्ट्रे करता था?
principles of multi level. So charter. इंडिया की बात नहीं कर रहा, So charter. मैग्ना कार्टा क्या था उसके अंदर, क्या है मैग्ना कार्टा? Rights Rights of citizens. human, क्या बोलते हैं? Certain compromises by the king. Where there was no requirement for him to make. किंग का मतलब क्या होता था at like in 1215 when this document came into being, क्या मतलब होता था किंग का? Representation of There is a saying that the king can do no wrong. कोई गलती ही नहीं कर सकता वो, whatever he does is the law, is the correct thing to do. There was absoluteness in his power even at that time, right? For the very first time a document came into being which can now limit the power of the king by saying that the people who are residing within his domain do have certain rights which even the king cannot surpass, which even the king cannot restrict. तभी तो कहते हैं इसको फंडामेंटल राइट्स का जो ओरिजिन है magna carta से किया गया 1215 में जाके. क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही तो है एक तरह का. दिस इज ऑल्सो लिमिटिंग द पावर इवन ऑफ द माइटी किंग ऑफ दैट टाइम. हाँ जी. चीज ऐड करना चाहता हूँ, मतलब maybe it is not that relevant. मैग्ना कार्टा के जो provisions हैं, Yes, yes, I know. मैं तभी कह रहा था, you cannot choose how you are born, but you can choose how you are grown, right? बिल्कुल है, I know very much so. इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जा रहा, चलो इसमें हो. But still, the way it has projected in people's mind that yes, even those who governs us can be controlled, चाहे किसी भी reason की वजह से हो. Those who are being controlled, those who are mere the disciples of the state, they can also have some right which they can exercise against the state, mighty state itself. तभी तो है सीधा, अगर आपका fundamental right violate हुआ, approach the Supreme Court of India, no one can stop you. This is your fundamental right as well. कल भी डिस्कस किया था आई थिंक आर्टिकल 32 के अंदर. ठीक है, that's why B.R. Ambedkar he called it the bulwark of the constitution. It is what makes it a reality. The objective of the constitution makes a reality. So when we read constitutionalism, it is always read and thought before Barber made his assumption and he conveyed the idea कि नहीं positive भी हो सकता है. We always read constitutionalism in the essence of negative constitutionalism, which implies idea of limited government emerged in the backdrop of historical experience of tyrannical rule. वही बात है हमारी जो प्रैक्टिस में फॉलो किया गया है, जो अब तक हमने देखा है होते हुए. क्यों बना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? डू यू नो दैट? क्यों बनी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? To limit the government, because if we would have failed in doing so, then somehow the basic principles of the constitution which were evolved by the forefathers हाँ जी. would have been gone because of the increasing To control the absolute power. भाई उन्हें तो हम इलेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं को हम लिमिट कर रहे हैं. अब यकीन किसी ऐसे पे कर रहे हैं जिसको ना इलेक्ट करते ना अपॉइंट करते, देन व्हाट? फिर भी बन रही है. इवन देन देयर इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. it is more of checks and balances rather than election, because once you elect anyone, you elect them for 5 years, right? But you can bring no confidence motion in the middle as well. That can be, but the power gets concentrated in few hands, in those 500 people who can actually make that happen, who can bring no confidence. But in order to understand the basic principles which have been evolved by the forefathers, it is highly possible that people of the elected people, the elected representatives, may miss that basic principle. But we can trust on the Supreme Court because people who have been judged for a while have better understanding of the principles which were involved. Okay. So we can sort of. It is more of a check. So 32 people are better than 500, right? Sir, I think that's what you're trying to convey. sir, it is. See, when we look at basic structure doctrine, right? It's not just that it is an evolution of the judiciary. No, judiciary ने evolve नहीं किया उसको. इस experience ने evolve किया उसको. I was going through a book by Nani Palkiwala,
and he conveyed how, this idea of bringing the argument relating to the basic structure doctrine came into being when he was arguing with regards to Keshavanand Bharti case. He had nothing to say to the court. Had a hearing at 9 a.m. and it was 5 a.m. in the morning. He had nothing to say to the court. He had no argument whatsoever, right? And he was trying to form something to limit the power of the government. कुछ नहीं idea था क्या करना है क्या नहीं करना कैसे करें. He read about a judgment of the Supreme Court of Pakistan, right? That came in 1965, and there, for the first time in their country, they have implemented the basic structure doctrine. Pakistan. Yes, the Supreme Court of Pakistan. Word कुछ और use किया होगा because it is That was the word for the first time. judicial invention of Indian court लिखा जा रहा है. No, it's not. जर्मनी वगैरह ने भी इंडिया से कॉपी किया है, ऐसा बोलते हैं. नहीं है. Even before that, the world को इंडिया ने basic structure नहीं. इंडिया ने मीनिंग समझा है basic structure doctrine का. कोई नहीं, बट पता चलना चाहिए ना कि सिर्फ वो 32 लोग या 34 लोग नहीं डिसाइड कर रहे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होती है क्या नहीं होती, सो दैट you understand the meaning of the same. So when he went through that judgment, he understood one thing, that I do not have to argue what is constitutional and what is not constitutional. All I have to argue is how it is being used and how and in what manner it can be misused. Just before Keshavanand Bharti case, the then Honorable Prime Minister of India, Indira Gandhi, she brought a few bills, and fortunately they lapsed. The bill was granting unlimited power, total immunity to the Prime Minister and alongside President, Chief Ministers, etc. Even if they commit any crime, they cannot be penalized. So when that bill was brought, it was lapsed afterwards. He got that argument here in front of the court, that if at all the legislature has unlimited power, if at all the legislature can do anything whatsoever they want, just by following the procedure under Article 368. ठीक है, Article 368 talks about amendment to the Constitution. जो मेथड है वो भी थोड़ा स्ट्रिक्ट दे दिया, थोड़ा टफ दे दिया, राइट? कि भैया रेटिफिकेशन वगैरह भी जरूरत है स्टेट्स की, हाफ ऑफ द स्टेट्स की, अगर आपको मेजर चेंजेस लाने कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज लाना है कुछ. लेकिन अगर वो प्रोसेस फॉलो कर पा रहे हो, यू कैन इवन डिलीट द कॉन्स्टिट्यूशन. You can have unbridled power, whatever you would want, and that can never be the idea of the Constitution itself. Something which has given you power, because eventually the legislature is a born out of the Constitution only. It cannot give you or any one of the organ such a power to destroy the Constitution. And then we have the basic structure doctrine in front of us. वो भी बात क्या करती है? Constitutionalism की तो बात करती है वो भी. That you cannot have unbridled, unlimited power. पर सिर्फ historical जो हमारा experience रहा है अब तक, the power was misused just a few years back when we saw the era of emergency. Even then, that helped a lot in creating that limitation. It views constitutional rights as exemptions from governmental power and emphasizes the precedence of private rights over public purposes. Public purpose अपनी जगह है, राइट? कि गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि अगर लॉज बना रहे हो तो ये चीज माइंड में रखोगे, ये डायरेक्शन चलनी चाहिए आपकी, राइट? आर्टिकल 44 अभी न्यूज में है काफी. क्या है उसके अंदर? यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट? अगर एकदम से इंप्लीमेंट कर दोगे, अगेन दैट विल गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. इट नीड्स टाइम for people to realize how their civil laws are going to be. So how much time? Howsoever, जितना भी required है. It might require a lot of, because पता है क्या? Bloodshed हो जाएगा अगर नहीं करा सही से implement आपने. जो हमने 1947 just before the independence notice किया या feel किया था, वो वापस feel करना पड़ सकता है. तो जितना भी टाइम चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी repeatedly बोला है, जितना टाइम चाहिए ले लो. But you need to understand this, that private rights of a person, जब भी तो हमने पार्ट 3 को ऐसी एक जगह रखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, it should always be the supreme thing, it should always be respected. No other part of the constitution or no other part of the legislation can ever come in conflict with the
Part 3 of the Constitution itself, fundamental rights of the people itself, that sets the light on negative constitutionalism. It includes constraint on both legislative, executive powers through judicial review as well as judiciary. It restricts the judiciary as well. खुद डेवलप करा judiciary, judicial restraint की तरह. Safeguard individual liberties, renders more importance to private rights than public welfare. Now what about public welfare? Then came N.W. Barber. Constitutionalism में judicial restraint भी आता है. It includes everything, yes. Limited ही तो है, limitation की करना ही तो है वो. और सर सबसे फ्लैगशिप एग्जांपल तो मुझे लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ही होगा. बिल्कुल. Basic Absolutely. structure डॉक्ट्रिन जुडिशरी को भी लिमिट करता है. Yes. कि आप कुछ तो भी बिल्कुल. Why not? Why would it not? तभी तो जुडिशरी खुद ही बोलती है ना, जुडिशियल रिस्ट्रेंट. इवन दो उस केस मान लीजिए कोई XYZ जजमेंट है और उसके बहुत आर्बिट्ररी है और उसको लिमिट करता हुआ कोई प्रीवियस जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं है उस एग्जैक्ट सब्जेक्ट मैटर को, ठीक है, तो भी नहीं कर सकती. बिल्कुल बिल्कुल. They cannot destroy the constitution. They cannot destroy the basic structure as well. बिकॉज़ इट दोबारा अपील करके आप दोबारा Because एक चीज समझो, उनका तो काम ही उसको प्रेजेंट करने का, उसको रेस्पेक्ट करने का, उसको प्रिजर्व करने का है. उनका तो रोल ही वो है. They themselves cannot do it as well. तीनों ही जितनी भी ऑर्गन्स बने हुए हैं सबको कंट्रोल करा जाता है. N.W. बार्बर जब देखा कि हर चीज में वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनिज्म ओनली. Constitutionalism is always portrayed as the negative aspect, which always limits. Then we are forgetting one important thing. It also empowers. It also empowers these institutions to act in a certain manner, to do their function properly. वो भी तो जरूरत है. It's not just limiting their power, but granting them power to achieve their objectives, to achieve their reason why these institutions came into being in the first place. So that's why he differentiated between negative and positive constitutionalism. He defined positive constitutionalism as constitutional powers which secure certain ends, such as national security, prosperity, the public good, the greater public good, the directive principles. अब जब आप DPSP देखते हो, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, when we will try to understand the interlinking, the connection between the DPSP and the fundamental rights, तब हमें एक चीज फिर समझ आएगी, there might be conflict in between them. Right? Achieving the objectives of directive principles, they might come at the cost and expense of the fundamental rights of the people. Then what happens? तब क्या होगा? 44 और 25. 44 और 25 amendments. नहीं सर, आर्टिकल्स. क्या उसमें? अच्छा, ओके, राइट टू रिलीजन एंड UCC, चलो ठीक है. और उसके अलावा और राइट टू एजुकेशन. कल आर्टिकल 39A के बारे में बात करी थी हमने थोड़ी, ठीक है. और एक जगह आता है आर्टिकल 19 जहां पे आपको इतनी फ्रीडम्स दे रखी हैं. देन अगेन व्हाट हैपेंस देन, राइट? तो वहां पे आता है सुप्रीम कोर्ट का काम या फिर कोर्ट्स का काम, जुडिशरी का काम, टू हार्मोनाइज देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैलेंस बिटवीन देम. एंड हियरइन व्हेन वी लुक एट पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, ये अचीव करवाता है उस चीज को. हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को एज अ कॉम्पिटिटर और एज अ restrictor of the legislature नहीं देख सकते या executive नहीं देख सकते. They have upheld numerous laws. They have upheld numerous legislations. क्यों करें? Because they are also trying to achieve the objective of the constitution itself. They also support the other organ of the government, and they have to. It is their role to do that, not just to restrict, but also to supplement and empower. That aspect is your positive constitutionalism. So can we devote judicial activism on the basis of positive constitutionalism? Yes, we can, definitely. Right? Judiciary steps in where the legislature or the executive fail to fulfill their duty. So what if we are writing the answer? Write the statement. Most definitely you can. बिल्कुल कर सकते हो. So such powers are absent in negative constitutionalism. क्योंकि वो empower कर रहा है ना उनको कुछ तरीके से act करने के लिए. सिर्फ हर एक को रोक, चेक एंड बैलेंस नहीं बना रहा सिर्फ वो साथ में उसको सप्लीमेंट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है. एंड हियरइन देयरफॉर द फोकस ऑफ नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनिज्म फोकसेस ऑन पर्सनल इकोनॉमिक वेलबींग, और उसका उल्टा है. पॉजिटिव वन फोकसेस ऑन द पब्लिक पर्पस, पब्लिक वेलफेयर, हाउ टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर गिवन अंडर द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हाउ दे शुड नेवर बी एट द कॉस्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल.
So this positive model of constitutionalism acknowledges the need for constitutional structures to guard against abuses of power. It is not utopian in nature, but is focused on creating a strong state able to work for the good of its people. और वो जब तीनों ऑर्गन साथ में खड़े होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, वो तब बनेगा. कई बार कॉन्फ्लिक्ट में भी होंगे, होना भी चाहिए, right? Because after all of them are trying to protect and achieve the objective of the constitution only. Further, positive constitution contains a large principle such as separation of power, state sovereignty, subsidiarity, etc. to help determine the institutional structure of the state and constitutional interaction of these institutions. So the separation of power है, उसका essence होता है कि it creates checks and balances हाँ जी. and tries to limit the government. As well as Also, to function within their parameters Right. and keep on assisting the other. right. It's And so the positive constitutionalism है, that is talking about creating a strong state. yes, Right. Now, when we separate the powers, it may lead to certain weaknesses and certain areas where coordination may be very important, but is lacking because of the separation, right? जैसे for example. एग्जाम्पल के लिए सर नेशनल सिक्योरिटी में आपने एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव को लेट्स से आपने दोनों को अलग अलग दे रखा है रिस्पांसिबिलिटीज बट एग्जीक्यूटिव वांट समथिंग टू हैपन वेरी क्विकली बिकॉज़ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी ठीक रिक्वायरमेंट है. but because the legislative process is very hectic and very long driven, that's why it is not that easy to implement it there itself. So they are given free hand and under certain circumstances as well. तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जो हम कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का पार्ट है, सर ये गलत नहीं बैठ रहा है? बिल्कुल भी गलत नहीं है. रीजन बताता हूँ. For example, there are several laws with regards to national security itself. जैसे मकोका देख लो आप, UAPA, right? उन laws में एक चीज दिखेगी आपको. They are not patently constitutional. These laws are not at all in line with the Part 3 or the fundamental principles of the Constitution. They do exist. They do exist. And Supreme Court has always upheld their constitutionality. They are basically example of positive constitutionalism. They are basically the example of positive constitutionalism. Why? Because Supreme Court said it's not just the constitutionality we have to seek. It's also the need. It's also the purpose. Why these laws are enacted in the first place. हमें वो जरूरत भी देखनी पड़ेगी, वो फुलफिल भी करनी पड़ेगी. अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखते रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव कभी अचीव नहीं कर पाएंगे. यू नो आफ्सपा पढ़े उसके कुछ प्रोविजंस कभी आज तक? डिस्टर्ब एरिया आपने एक बार डिक्लेयर हो गया एक डिस्टर्ब्ड एरिया. the army can take action. What action is it? So they can kill anyone without warning. On site, without any warning, without any reason whatsoever, and they can never be, criminalized for the same. Absolute immunity is granted. In the public court, but in the military court they can. ठीक है, even that's their internal structure as well. But The parameters are different there as well. the conviction rate is very amazing. वही कह रहा हूँ, the parameters are very different. वो objective देखते हैं सिर्फ. वो ये देखते हैं इवेंचुअल रिजल्ट क्या हुआ, कैसे हो रहा है, ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं लॉज. फिर आ रही है बात समझ में? तो अगर सेपरेट, बिकॉज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसीलिए एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन पे नहीं मानता. देयर इज नो रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर्स इन बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. हाँ ठीक है, देयर इज वन प्रोविजन व्हिच सेज एग्जीक्यूटिव शुड बी separated from the judiciary, but that is the very much extent of separation of power that we can see in India. Nevertheless, executive or legislature, they wander around hand in hand every time, and they have to, in order to fulfill the objective again. So sir, अगर ये statement है कि positive constitutionalism weakens the separation of powers, it is wrong. No, never. It does not weaken anything at all. It tries to achieve the objectives of the Constitution in every way possible. It grants you the power. Yes, Article 21 again. Article 21 में power limit की करी गई है. State की power limited है, but also power दी भी तो गई है. Procedure अगर established by law है. Article 32 भी तो है फिर. The writ petition of habeas corpus भी तो है फिर. किस लिए है वो? जो आर्टिकल 21 का ऑब्जेक्टिव है उसी को अचीव कराने के लिए तो है. दैट एस्पेक्ट इज योर पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म.
So herein putting positive duty on state to have secured nation and order in the society, and positive duty on the citizens as well, that we tend to forget every time. We just want our rights, not our duties. भूल गए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब भी नहीं हमने करा था, बाद में थोड़ा बहुत याद आया तो ऐड कर दिया. Are they enforceable? अगर इनके लिए लॉज बना दिए तो हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है. हाँ जी. It's a reasonable restrictions are also kind of duties. नहीं, it's just limitation of a right. But sir, while you're speaking, you can't be harming the public morality. So duty थोड़ा ही है फिर. the duty is over that. Yes. Restriction is a passive or restrictive act. Duty में आपको कुछ कहा जाएगा that you have to act in a certain way. I think sir, मतलब in spirit it is true, but मतलब this is restriction is what you may or not do. and that's चलो. what the obligations are all about. अब मैं वही कह रहा हूँ in spirit it is good. ठीक है. Agreed. So social reforms or you can say collective good, जो हमारे DPSP स्पेसिफिकली जो possess करते हैं और जो prioritize करते हैं, right? They can only be achieved when we understand the word constitutionalism not just in its negative fashion but also the positive one. तभी हमें realization होता है. अब जैसे there is this mostly disputed fundamental freedom जो थी हमारी, हुआ करती थी. क्या? Right to property. जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब वो डिबेट चल रही थी उसमें सबसे ज्यादा डिबेट सिर्फ इस टॉपिक पे हुई है. द राइट टू प्रॉपर्टी, शुड इट बी गिवन अ फंडामेंटल स्टेटस और नॉट? एंड इवेंचुअली वी डिड, एंड वी ऑल्सो रिमूव्ड इट. दैट इज द ओनली फंडामेंटल फ्रीडम, or you can say any fundamental right whatsoever that has been taken out from part 3 of the constitution. जुडिशरी ने वो भी तो करने दिया. पार्ट 3 तो अनमैचेबल, अनअमेंडेबल, लेकिन जुडिशरी ने करने दिया ना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन का. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइड करता था एक तरफ जाने के लिए. अगर आप उसको रखोगे आगे, प्रायोरिटाइज करोगे, तो डीपीएसपी बनाए क्यों है फिर? डायरेक्टिव दे दो, सिर्फ पावर नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? हटाने भी दिया ना. दैट इज पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 embodies fundamental right to freedom, grants all citizen with the protection, which is a negative constitutionalism on the state itself, putting restraint on the state. But with regards to 19.2 to 19.4, ये positive constitutionalism है, because they work for the betterment of the entire public, not just the person, not just the citizens of India, right? Because article 19 सिर्फ citizens का है और किसी का नहीं है. वहां पे आता है आपका positive constitutionalism, जहाँ पे कहता है स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट योर फंडामेंटल फ्रीडम. आज ये एक केस था, आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया जिसमें दे वर डिस्कसिंग कि हाँ, कैन फॉरेनर्स हैव द एबिलिटी और द फ्रीडम टू वॉन्डर हियर एंड देयर, टू लिव एनीवेयर दे वुड वांट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 19 नहीं होता फॉरेनर्स के लिए, इट्स जस्ट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. यस, दे डू possess आर्टिकल 21. They possess Article 21, which is for everyone, every person whosoever there is, चाहे वो citizen हो या ना हो, right? But not these freedoms. ऐसा क्यों कर रखा है हमने? Certain rights are privileges, certain are necessities. Yes, absolutely. ये difference है बस. जो privileges हैं वो सिर्फ privilege class को मिलेंगे, जिन्होंने इतने सालों साल struggle करी है, struggle देखी है, inequality देखी है. Right? Remember that title के dogs and Indians are not allowed. जिन्होंने वो देखा है, उनके लिए वो privileges. अब दूसरों के लिए, because it is a fundamental right, the very existence of a human being depends on these rights. वो सभी के लिए, that is given to everyone. So principles and norms which promote constitutionalism in a country are, first thing is written constitution. ऐसा नहीं है unwritten will not possess the qualities of constitutionalism. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Right? But when there is a written constitution, when the norms are so expressly provided in a certain supreme document, that helps in achieving the objective of constitution as well. क्योंकि उसमें लिमिट बताई जाती है, उसमें पावर्स कर्टेल कितनी करी गई है वो बताई जाती है, कितनी पावर दी गई है वो बताई जाती है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो बहुत ज्यादा जरूरत है
to understand the reality of constitution itself. Restraint put कर रहा है constitution, चलो ठीक है. Constitutionalism कह रहा है कि हाँ, the government or the legislature or the executive, they must be having limited power only. Perfectly fine. लेकिन अगर कोई उसको चेक रखने के लिए नहीं है, अगर चेक रखने के लिए भी है लेकिन पावरफुल नहीं है टू कंट्रोल, टू लिमिट देयर पावर, जैसे था काफी समय तक जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम आजाद हुए 10-15 साल तो जुडिशरी को समझ में नहीं आया कि पावर क्या है हमारे पास. क्यों? क्योंकि भाई द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सिटिंग इन द लेजिस्लेचर इटसेल्फ. दे वर द लेजिस्लेचर फॉर द टाइम बीइंग. So they had no idea what can we do and what we can't. It was only after Keshav Nand Bharti case, that is the very, turning point for India, which brought us this constitution that we have right now. उसके बाद में हुआ कि नहीं, we have the power, because it's not the power that is being possessed in these 30 to 34 persons. We have those workload, we have that responsibility of the Indians who are losing their rights because of some malpractice, because of some arbitrary fashion usage of powers by the legislature or executive. तो हमें वो पावर रखनी ही पड़ेगी अपने पास में, बिना उसके काम नहीं चलेगा. वो पावर भी ली, इंडिपेंडेंस भी रही, तब जाके you can limit anyone in any manner whatsoever. The doctrine of rule of law and separation of power, again one of the aspect. Free elections to legislature, election free होने चाहिए. जो आपकी क्या है ईवीएम मशीन्स हैं उनमें कोई घोटाला घपला नहीं होना चाहिए. इवेंचुअली अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए. फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल शुड बी गिवन. फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. व्हाई? व्हाट इज फेडरलिज्म? नेक्स्ट क्लास हमारी फेडरलिज्म पे ही होगी, जो नेक्स्ट होगी. तो उसमें थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेवरल टाइप्स एज वेल. लेकिन एक समझ लेते हैं पहले, व्हाट इज फेडरलिज्म? Federalism is that a center and regional governance, but not one subordinate to the other, rather equivalent, and with different subject matters. ओके. और कोई थोड़ा सिंप्लीफाइड से मैनर में? Center is not the big brother of state. Distribution of power. So देखो, जब हम वर्ड समझते हैं ना फेडरलिज्म, इट्स वेरी क्रूक्ड वर्ड. इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड, नॉट एट ऑल. फेडरलिज्म, एवरी फेडरलिज्म दैट वी कैन सी इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. इंडिया में फेडरलिज्म है लेकिन फेडरलिज्म नहीं भी है, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्वाजी फेडरलिज्म, समथिंग व्हिच कम्स एज अ चीप कॉपी ऑफ फेडरलिज्म. परफेक्ट फेडरलिज्म क्या है? वो भी कुछ नहीं होता. But yes, we can understand federalism by first understanding unitary form of government. A government which is united, where the power is concentrated within one hand, which then controls the other subsidiaries. Rather within one institution. One institution you can say, one organ you can say, right? तो unitary का opposite है federalism, जहाँ पे we also aspire that power should always be distributed, not centralized. Not concentration of power नहीं होना चाहिए, distribution होना चाहिए, adequate distribution. We have that, but again because of our beautiful history as well as beautiful neighbors, we have to understand, and also the way we have diversity in our culture, the diverse population that we have, and the way we forcefully even integrated some of these states. Keeping that in mind, we had this understanding that federalism in its pure form we cannot have it in India. That is not going to prevail. या तो वो prevail नहीं करेगा, India prevail नहीं करेगा. So we have to do something about it, right? So that's why we created this unique form of federalism. That is known as quasi federalism, or you can say federalism with a unitary spirit that keeps these powers which is granted to everyone in check as well. That as and when the time comes, as and when it is the requirement, they can also be taken back from you. The existence of a state can be removed just as easily. Their names can be removed just as easily. Yes, sir. You can be a state, Is not a constitution. and by the next day morning, you might lose your status as a state altogether. That is the beauty of Indian Constitution.
That was the requirement of Indian Constitution. So you can see through several provisions like 72, 73, 91, how the power prescribed by the constitutions, they also represent constitutionalism. Then you can see regarding the procedures as well. They say procedure for impeachment of president. President? कौन होता है president? Who is the president? कि अगर पूरे कंट्री के लोगों की लाइन लगेगी, सबसे पहला वो इंसान खड़ा होगा वहां पे जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा बाकी सबको. That person, he can be impeached. There is a provision in the constitution to impeach the president of India. That shows you what constitutionalism in its reality means. Procedure in parliament with respect to estimates, special procedure for money bills, etc. Enactment करने के लिए, then article 368 में we can see special procedure is there. So in Navtej Singh Johar versus Union of India, it was observed separation of powers and checks and balances amongst the branches of government is core to establish the principle of constitutionalism. And Professor Weil, I got this today itself, so I included it. It will not be in your notes. Western institutions, अब उन्होंने थोड़ा एक starking difference समझा कि जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है, हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स. हमने करा तो बहुत जगह से लेके है, राइट, लेकिन हमने उसको सुई जनरस बनाया है. वी हैव क्रिएटेड इन अ डिफरेंट वे which is particular and apt for the people of India. So he said Western institutions theorists concerned themselves with the problems of ensuring that the exercise of governmental power, which is essential to the realization of values of their societies, should be controlled. कि हमेशा controlled होनी चाहिए. That it should not itself be destructive of the values it has intended to promote itself. कि जिस चीज को प्रमोशन करने के लिए, वही ना जो जैसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर को पावर दी गई है लॉ बनाने के लिए, लेजिस्लेचर को पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए. इट कैन नॉट बी सच अ पावर विच कैन इवन डिस्ट्रॉय, डिलीट और ऑल्टर द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वहां से अराइज होती है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एज वेल. Constitution of India is fully enriched textually with the democratic principles, but the existence of Constitution makes it a total reality. Mere existence of Constitution is not at all enough. It is the political maturity, the various traditions of the people that import meaning to the Constitution. Now coming to the constitutional morality, the very basic. I think time to nahi hua na, abhi hai chalo. So when we read constitutional morality itself, herein, it means the adherence to the core principle of the constitution in a particular democracy. I hope you will be able to differentiate between constitutionalism and constitutional morality. दोनों काफी differentiated thing है. एक चीज लिमिट करने के लिए बताती है या एम्पावर करने के लिए बताती है, एक चीज उसको strictly adhere करने के लिए बताती है. So even at the time of the creation of the constitution, Dr. Ambedkar also talked about constitutional morality. So he referred to George Grote and said that when we read about constitutional morality, it is a paramount reverence for the forms of constitution, enforcing obedience to authority, acting under and within these forms, yet combined with habit of open speech, of action subject only to definite legal control. Act howsoever you want, but you need to know your limits. You need to know your set boundaries. You need to know your purpose, why you were created in the first place. Supreme Court has put emphasis on this word as well. For example, in Navtej Singh Johar, जहाँ पे उन्होंने जो आपका सेक्शन 377 है आईपीसी के अंदर, अब तो है ही नहीं, खैर जो नया बीएनएस आया उसमें उड़ा दिया उन्होंने, वो कि कोई जरूरत नहीं है, तो पार्शली स्ट्रक डाउन किया था उन्होंने. अब कंप्लीटली हो गया, बट दैट टेक्स अवे राइट्स ऑफ सेवरल पीपल एज वेल. Nevertheless, they observed the supremacy of constitutional morality is far greater important than social morality, what we perceive in the society. That is not important. How the constitution perceives the society should act is way more important. Sabrimala case, where the Supreme Court read the word morality in the light of constitutional morality only. So constitutional morality means the morality that has inherent element in the constitutional norms and the conscience of the constitution itself. It advocates the principle of constitutional justness without subjective exposition of generosity in any manner whatsoever.
फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन, वो तो हमने पहले देख ही लिया है कि किस तरह से रिटन होता है, किस तरह से अनरिटन होता है. कुछ भी अगर डाउट आए तो पूछ लेना अब, अदरवाइज वी विल प्रोसीड नाउ. So constitution implies that the exercise of political power should be bound by limitations, some sort of control, check and balance, whether it's a written one or a unwritten one. लेकिन हाँ, अगर written constitution है, just like we have, it is very much possible for it to achieve the objective. लेकिन अगर unwritten है, just like in Britain, वहाँ पे कोई written constitution नहीं है, right? लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ constitution नहीं है. They do have constitution, which is dispersed in several other legislations, common law principles, precedents, judicial interpretations रहते हैं उसमें भी. लेकिन वहां पे एक चीज डिफरेंट है. हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म में बना के एक ग्रैंड नॉर्म बना दिया, एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बना दिया, वेयर एवरी अदर लॉ, एवरी अदर स्टैट्यूट हैज टू बो डाउन टू इट. वहां पे नहीं है. वहां पे दे हैव अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, where the parliament is the supreme thing, where the parliament has the power to replace, reject, create something new altogether with regards to the constitutional principles as well. So limited government नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई. लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं हुई, because it is the people eventually who is going to limit the government. If the person or the government itself loses its popularity amongst the people, they lose their status. वो limited government उस तरीके से है, whatever suits their purpose. A written constitution is one which is written down in the form of comprehensive constitutional document. But we can say that constitutionalism का एक बहुत ही important aspect है. Yes, most definitely. आप constitutionalism achieve ही तब कर पाओगे जब आपको पहले clarity होगी इस चीज की. Powers कितनी दी गई हैं, कैसी दी गई हैं, किस हद तक दी गई हैं, जो आपको पता होगा कैसे आपको एक्ट करना है. बट इज योर इंटर रिलेशन विद अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ यू हैव टू रिएक्ट एंड एक्ट विद द पीपल ऑफ द कंट्री, राइट? हाउ दीज पीपल कैन एक्ट विद ईच अदर. जब वो क्लैरिफाई होगा तभी जाके तो आप उसको समझ पाओगे कितनी लिमिटेशन करनी जरूरी है या कितने गोल्स आपको अचीव करने जरूरी हैं. सो अनरिटन, व्हेन द नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द गवर्नेंस इज interspread in several statutes, some in constitutional principles, कुछ conventions में भी होता है. Like we have adopted constitutional conventions. We have several constitutional conventions which we have adopted from Britain only. That was in practice in India before independence. We retained them so far as they are not going against the Constitution of India. जहाँ पे Constitution silent था. And the Constitutional Convention, the usages, particular usages over time, they are better at explaining the Constitution. वो हमने रख भी ली अपने पास में. जैसे गवर्नमेंट बनती है, मान लो, ठीक है, इलेक्शंस हुए, किसको बनाया जाए, किस पार्टी को इलेक्ट किया जाए, किस पार्टी को चांस दिया जाए टू पुट फॉरवर्ड देयर क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी मेजोरिटी होगी, ठीक है, दैट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट के पास पावर है. क्लियर है. चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ हंग पार्लियामेंट? President invites at his discretion. कहाँ लिखा है? Where is it written that when there is a hung parliament, that it is the president, he has to invite the party which has the highest number of votes? कहाँ लिखा है ये? The constitution is silent on this, right? लेकिन ये जरूर है, it is the president who has this, who can have this power or discretion to enjoy in the first place. It is the constitutional conventions that comes into the assistance of the constitution and fills these gaps. क्योंकि कितना भी बड़ा comprehensive document बना लो, you cannot pertain to every situation there can be. इसीलिए constitutional conventions आती हैं फिर. हाँ, उनका जो रोल है written constitution में, वो limited होता है, right? It has to abide by the constitution itself. It has to supplement the constitution itself. लेकिन अगर unwritten constitution है, there these non-legal norms have very wider role to play. वहां पे वो सेट करती हैं कैसे गवर्नमेंट को एक्ट करना होता है. सो डिवीजन ऑफ पावर्स इज नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज वेल. उसकी भी जरूरत है, तभी समझ पाएंगे, तभी कोई चेक एंड बैलेंस रख पाएगा, तभी कोई असिस्ट कर पाएगा. आपको अपना रोल पता होगा ना, किस रोल में यू हैव टू फंक्शन. लॉ ही बनाना है बस, दैट इज माई रोल. एग्जीक्यूशन को सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, एडमिनिस्टर करना है, दैट इज देयर रोल ओनली. जुडिशरी को इंटरप्रिटेशन करनी है,
जुडिशरी को चेक एंड बैलेंस रखना है, जुडिशरी को लोगों के राइट्स जब अगर किस तरह से वॉयलेट हुए वो दिलवाने हैं, रेमेडी प्रोवाइड करनी है, पता है ना उनको अपने रूल्स. They are going to be in conflict with other institutions from time to time, but nevertheless they have to act in that way, and that puts constitutionalism at its correct place. To understand the concept of transformative constitutionalism, अब ये एक नई टर्म थी जो 2018 में रोज हुई, ट्रांसफॉर्मेटिव, राइट. ट्रांसफॉर्मेटिव थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था. इट मीन्स चेंज, बदलाव, राइट, बट नॉट जस्ट चेंज, a change for better, which changes itself, changes its nature to get something much more better than the previous nature that was going on. So when we talk about constitutionalism as well, then again we can understand कि हाँ, to change the constitution over time, हमने दे रखा है आर्टिकल 368 में, to change, to amend the constitution any part that you would want. ठीक है. हाँ, कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलनी चाहिए, जो नहीं चेंज होनी चाहिए, वो हमने रोकी भी हुई हैं इन द नेम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अगेन, राइट. लेकिन इट विल नॉट स्टॉप द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम एस्पायरिंग, फ्रॉम लुकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट सुप्रीमेसी इन इट्स फॉर्म. The ultimate goal of the magnificent constitution is to make right the upheaval which existed in the Indian society before the adoption of the constitution itself. तो ये दो तरीके आपके रखने के, किस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेके आ सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में. फर्स्ट इज बाय पॉलिटिकल वे. अलग अलग आपने ब्रांचेस बना दी, गवर्नमेंट की ब्रांचेस बना दी, right, and they are functioning within their domain only. They are not surpassing their domain. They are not transgressing their limitations. That is one way. Centralized power नहीं होगी, decentralization होगा, distribution of power होगा. There should not be just a central extreme superpower, but several mini powers, several regional powers. क्यों? Reason है उसका एक. जब अलग अलग तरह की diverse आपकी एक society है, जब डाइवर्स तरह की आपकी एक पीपल है, नीड्स सबकी डिफरेंट तरीके की है, तो अगर एक ही पावर रख लोगे तो अपना एक सिंगल ऑब्जेक्टिव से काम करेगी. लेकिन अगर रीजनल पावर्स हैं आपके पास में, डिसेंट्रलाइज्ड पावर्स हैं, दे विल नो द नीड्स ऑफ देयर पीपल एंड दे विल बी एबल टू बेटर फुलफिल देम एज वेल. फर्दर बाय जुडिशियल वे, बाय प्रोवाइडिंग फर्स्ट इंडिपेंडेंस टू द जुडिशरी, दैट अंडरस्टैंडिंग दैट यस यू कैन कंट्रोल the other organs when they are surpassing their limits, when they are surpassing their constitutional limits. And further judicial review, क्या मतलब है इस वर्ड का? रिव्यू क्या होता है? रिव्यू चेक करना, तो व्यू भी हो गया. व्यू इज टू सी समथिंग, review is to relook at something under some particular context. So when we say judicial review, right, judicial, or you can say judicious, it is relooking at the maybe working of the executive, working of the legislature with the eyes and lens of the constitution. That is your judicial review. So herein, on the administrative and legislative power, you can see these are the ways how you can put in the constitutionalism in the constitution. Further, with regards to constitutional conventions, they consist of legal norms. चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देख लिया लीगल नॉर्म्स होते हैं हमारे, एनफोर्स्ड अप्लाइड बाय कोर्ट्स, जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर है, जो प्रेस्टिजियस डॉक्यूमेंट हमारा उसके अंदर गिवन है, राइट. दे हैव टू बी स्ट्रिक्टली अडियर टू. अगर कोई आप लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाएगी विच वायलेट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 13 ने सीधा ब्लंटली लिखा हुआ है क्या, that if a law is made, or if anything, any law is made by the legislature which violates part 3 of the constitution, it will be null and void, empty, खाली, without any legal existence, जिसकी कोई legal right ही नहीं create कर सकता, वो limitation नहीं बना सकता वो. legal norms. इसके अलावा जो आपके नॉन लीगल नॉर्म्स हैं which arose from time to time by the practices that we follow, right, over and over again. These legal norms are your conventions or usages.
And therefore he said constitutional conventions provide the flesh which clothes the dry bones of the law itself, which fulfills and covers those areas which the constitution failed to protect, which the constitution failed to fulfill as well. So Jennings said within the framework of the law there is a room for the development of the rules of practice, rules which may be followed as consistently as the rules of law themselves. जैसे constitution के एक wordings होती हैं, उन तरीके से ऐसे norms भी बन सकते हैं from time to time. Those who will supplement, which will be respected even if they are not existent in the constitution, and herein which determines the procedure with which men can, concerned with the government follow. Further, they are informal, uncodified canons भी बोलते हैं इनको कई बार. That these are uncodified canons. आपके PYQ में I think एक question भी इसी के बारे में आया हुआ है कि how and what are their implications, what are their roles, किस तरह का उनका रोल है एक written constitution में, right? तो वहाँ पे आपको एक starking difference जरूर देना पड़ेगा कि yes, when we look at a written constitution, it has everything there can be, but there will be several things which it might miss. And there we go to these practices which were consistently followed, which adheres to the constitution, which assist the constitution. These non-legal norms, unwritten procedural agreements are your constitutional conventions. And they play a more significant role in the unwritten constitution than a written one. But to have a full picture of country's constitutional law, a reference need to be made to them. Constitutional conventions grow from long-standing accepted practice or agreement in areas where the law is silent, and such convention would be not breach the law but to fill the gap only. Constitution के against में कभी नहीं जाएगी. कोई भी constitutional convention देख लेना. It will never go against the constitutional principles. It will always assist it. It will always fill that gap. So they are requisite and they lead to discretion to the authority as well from time to time. They ensure flexibility in the working of the constitution. ज़्यादा rigid भी नहीं करता वो. ऐसा भी नहीं कि हाँ अगर हंग पार्लियामेंट होगी तो भैया इलेक्शन दोबारा से कराओ. वो भी तो फुलफिल नहीं कर पाएगा ना ऑब्जेक्टिव. भैया बहुत खर्चा होता है उसमें भी. लोगों के तो पैसे इवेंचुअली दोबारा से करो फिर से करो. इतने टाइम में कौन गवर्नेंस में कौन रहेगा, उस चीज़ की अनसर्टेनिटी रहेगी. पावर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में जा सकती है ऐसे टाइम पे. देखते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पाकिस्तान दिस हैपेंस, राइट. तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस, एंड हियरइन दे इवॉल्व और चेंज ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एज वेल. दे आर आल्सो ट्रांसफॉर्मेटिव इन इट्स नेचर. दे शुड नॉट ब्रीच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड दे मे बी इंसेपरेबल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. दे आर सो वाइडली अटैच्ड. जैसे लीच होता है ना, लीच चिपक जाता है, उस तरीके से it gets attached to the constitution whenever there is a requirement, and it is legally unenforceable. But nevertheless, when we look at the development of constitutional conventions in India, we can see that they are adopted just as equally as the wordings of the document of the constitution. जिस तरह से हमने privilege और supremacy constitution document को दी है, same supremacy is given to constitutional conventions over time. For example, in state of Rajasthan, हाँ जी. Conventions हमने खुद ही evolve की, कहीं से adopt भी कर लिया. Practices जो follow हो रही थी पहले से जो. हाँ जी, जो भी follow हो रही थी practice, as long as it is in line with the constitution, we have adopted them. ऐसे senior most जिसको हाँ चल रही थी काफी टाइम से. और उसके अगेंस्ट में फिर से even cry हो रहा है कि हाँ थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि हम can we adopt a better functionality, because हाँ eventually तरीका तो नहीं है वो सही जो गिवन है. सीनियर मोस्ट जिसको सीजे बनाने का नहीं, जैसे एक जज को ही बनाने का, सीनियर वाले जजेस को बनाने का, टू हैव देम इन द जुडिशरी इटसेल्फ, टू सेट देम इन द जुडिशरी इटसेल्फ. बिकॉज अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है ना कि आर्बिट्ररी मैनर में आप यूज नहीं कर सकते पावर, और पावर कभी कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं हो सकती. सो व्हेन वी लुक एट कॉलेजियम सिस्टम दैट एग्जिस्ट on the premise of this concentration of power, that is a problem. Questions are we current CJI से पूछा था. So he said that जब CJI होंगे तब कुछ नहीं बोलेंगे. जब जज होंगे ना तब कुछ नहीं बोलेंगे. The moment they retire,
द मोमेंट दीज जजेस रिटायर दे विल स्पीक देयर हार्ट आउट। वो क्योंकि पता है जब तक वो सीजेआई है तब तक वो सीजेआई की पोजीशन पे है, नॉट अ पर्सन। ही इज नॉट अ पर्सन, ही डज नॉट हैव हिज ओन पर्सनल व्यूज। Statesman. कॉन्स्टिट्यूशनल मैन। But sir, he said in the support of your argument. वही है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उस आर्गुमेंट को और फर्दर फ्लरिश होने में, when he will retire then he might even speak about it. जैसे अभी जस्टिस कॉल रिटायर्ड, he spoke about this very aspect of collegium system and how we can even adopt a better one. लेकिन for the time being it's working fine. So what better system is testing? वही डेवलप थोड़ा करने में टाइम लगेगा, वही बात है ना। अब तक हमारे पास उससे बेटर कुछ है नहीं। ऑल्टरनेटिव कुछ ऑल्टरनेटिव मिलेगा तो वो कर सकते हैं बिल्कुल अडॉप्ट। क्या हो सकता है alternative? ऐसे तो मुझे भी नहीं होता, थोड़ा अडॉप्ट ही करना, बनाना पड़ेगा कुछ वो इस तरह का। दूसरी कंट्रीज में अगर देखें हम, जैसे यूएस में देखें अगर, वहाँ तो और अनब्रिडल्ड पावर है, यहाँ पे एटलीस्ट रिटायरमेंट की एज तो है, वहाँ पे वो भी नहीं है। जब तक रहना है बने रहो। सर पॉलिटिशियंस के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। तो पॉलिटिशियंस यही चाहेंगे, लेजिस्लेचर यही चाहेगा कि हमारे हाथ में आए, कि क्योंकि इवेंचुअली दे आर द पपेट्स ऑफ द पब्लिक ओनली। धन्यवाद सर, ये अच्छा इसीलिए चल रहा है वो अब तक फिर। So when we look at the Supreme Court itself regarding constitutional conventions, in State of Rajasthan versus Union of India, it said constitutional conventions are legally unenforceable and have moral and political sanction. वहाँ पे थोड़ी एम्बिगिटी छोड़ दी लेकिन 1977 में, बट दे मे ऑल्सो बी बाइंडिंग इन नेचर, कि हाँ इनकी कोई लीगल स्टेटस नहीं है, इनका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनकी कोई लीगल बैकिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, राइट? बट दे माइट ऑल्सो बी बाइंडिंग इन इट्स नेचर। There is no distinction in between constitutional law and established constitutional conventions. वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑब्जर्व करा फॉर द फर्स्ट टाइम कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, दैट इज द स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस व्हिच सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, देयर इज नो बेसिक डिफरेंस एंड बोथ आर बाइंडिंग इन द फील्ड ऑफ देयर operation itself. So far as the particular constitution is silent, right, and there is a requirement for something, some norms, some principles to fulfill the gap, we can look forward to the constitutional conventions regarding the same. Then in SP Gupta, constitutional conventions may be inseparable from the constitution. फिर वो approach थोड़ी change होगी फिर। Now we understood कि हाँ ठीक है, even if we have a written constitution, the requirement and the strict adherence to some constitutional conventions are very much important to reveal the true identity of the constitution. नहीं तो हमें समझ में नहीं आया constitution what it wanted to convey, अगर ये gaps fill नहीं कर पाए। Further recently, ये पुराने वाले ये तो खैर, constitutional conventions may also be binding. There is no distinction between constitutional law and established constitutional conventions. Again, the Supreme Court reiterated. So if we look at the constitution, it also paves the path for constitutional conventions. For example, appointment of prime minister or chief minister by president in the case of hung parliament, assemblies, dissolution of house, power to dissolve the Lok Sabha, जहाँ पे discretion दी गई है उनको, right? Discretion तो दे दी, but how he can act, वो तो नहीं बताया गया constitution के बारे में, constitution ने convey नहीं किया वो चीज़। So therefore we look at the constitutional conventions for the same. As he also pointed out कि हाँ ठीक है, the supreme judge जो होता है आपका, he should always be respected and appointed as the chief justice as well. Convention थी हमारी, break भी करी हमने, उसके लिए hue and cry भी बहुत हुआ है, right? करनी भी उस पर्सन ने कुछ कर दिया था ऐसा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि करनी पड़ी। पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जस्टिस खन्ना, the living legend. Justice Khanna gave two things. First of all, ADM जबलपुर में dissenting opinion, उसके बाद basic structure की केशवानंद भारती में भी dissenting opinion. तो it was Actually, Justice Khanna at the time of delivering the judgment, पता है सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस था केशवानंद भारती, it is very vital. Not just because the basic structure doctrine has developed, because we need to understand this one more thing. मान लो अगर एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास में गया, राइट, एंड इट इज बीइंग हर्ड बाय अ बेंच, कितने बेंच में थे? केशवानंद भारती में 13 जजेस, द लार्जेस्ट बेंच वी हैव सीन इन द सुप्रीम कोर्ट। 15 भी तो नहीं कहाँ है वो? उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के, वो अलग केस है, अलग है वो।
सबसे बड़ी इसी में थी सुप्रीम कोर्ट की। एक चीज समझना, सपोज अ केस इज गोइंग ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट, राइट, हियरिंग्स आर गोइंग ऑन अगेन एंड अगेन ओवर टाइम। पहली बात तो 3-4 महीने की हियरिंग्स चली थी सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग केशव भारती। देयर वाज एक्सट्रीम गैप एज वेल इन द मिडिल। अगर इन 13 जजेस में से कोई एक जज भी रिटायर हो जाता बीच में, अगर इन 13 जजेस में से कोई एक रिटायर हो जाता या किसी की डेथ हो जाती है, बिकॉज देयर वर 2 जजेस जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे, इवन देन दे हर्ड द केशव भारती केस टिल द वेरी एंड, दे सस्टेन्ड देमसेल्फ, राइट, किसी ना किसी तरह से कि नहीं, बिकॉज वो पूरा प्रोसेस फिर से शुरू होता दोबारा से। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वाइटल। जो बन गई किसी तरह के, हाँ ठीक है, उसके बाद उसको हटाने की भी कोशिश की गई। देयर वाज अ केस टू डिस्ट्रॉय, टू रिवर्ट द केशव भारती केस, इट फ्लॉप्ड, बट ठीक है, देयर वाज अ ट्राई रिगार्डिंग द सेम। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, वेरी वेरी वाइटल टर्निंग पॉइंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So in Shashank Singh versus State of Punjab, there are certain exceptions in which the President was not obligated to act in accordance with the advice given by the Council of Ministers and was required to exercise his own personal discretion. नहीं तो अगर Constitution की wordings देखें, on the very face of it, it says भैया जो कह दिया Council of Ministers ने, the President has to be the puppet of the जो Constitution of Ministers हैं, but that is not the reality, right? He has to act, yes, absolutely correct. But he has his own discretions under certain situations. He acts as a safety valve. When जब हम आएंगे प्रेसिडेंट पे तब हम इस चीज को पढ़ेंगे. There was this Professor Kagzi when we were trying to determine what sort of position we would want to give our president in this parliamentary form of government. So he was a member of the Constitutional Assembly, and he said that he should always act as a safety valve. जैसे होता ना, आपकी घर की पाइपिंग से चल रही है, सब ठीक है, जब बस्ट होने को हो जाए, देयर मस्ट बी समथिंग टू स्टॉप दैट डिजास्टर. ही एक्ट्स लाइक अ फादर फिगर. ही इज समवन हु इज सिटिंग देयर, राइट, वॉचिंग एवरीथिंग, letting you do everything, but once you change your course to something which is unconstitutional, he is there to hold you, he is there to take you back. वो रोल प्रेसिडेंट का है, नॉट जस्ट अ पपेट. चलो ठीक है, बाद में इस पे करेंगे डिस्कस क्या रोल. Then again, appointment of जो senior most judges, chief justice हो गए, interpretation of 124. So with this we conclude our today's session. थोड़ा questions देख लेते हैं. कोई डाउट है भी पहले वो बता दो. All clear? पक्का? चलो लो. To preserve basic freedoms and dignity of individuals, constitution should be permeated with constitutionalism. पता है, अभी तो फिलहाल रहने देना, लेकिन वंस यू आर समथिंग, जब कुछ बन जाओ लाइफ में, राइट, जब अपना गोल अचीव कर लो, एमपीजेन जरूर पढ़ना. आपने मुझे लगा मत पढ़ना. जब कुछ बन जाओ, मैंने इसलिए कहा अभी मत पढ़ना. डोंट स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, राइट, बट इफ यू वांट टू नो द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली देन यू गो टू एमपीजेन एंड यू नो डीडी बासु. उसके बाद में जाना वहां पे. क्यों? तब आपको समझ में आएगा. जो ये क्वेश्चन है ना, एज इट इज वहां से उठा के दे रखे हैं. सर वो करते हैं ना सर, वो फिर समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा. 4 वॉल्यूम के 14 वॉल्यूम्स हैं, 14 वॉल्यूम्स नहीं, हैं. फर्स्ट जो शॉर्टर वाली नहीं सर, बड़ी वाली 14 वॉल्यूम्स हैं. 40 वॉल्यूम. आई हैव 14 वॉल्यूम्स विद मी, सर प्लान कैंसिल. राइट. तो इसीलिए, लेकिन पता है क्या, इन चीजों से हमें समझ में आता है, लेकिन राइट. तो जो उसका एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है एमपी जैन का, वो पढ़ लेना चाहो तो सिर्फ सारे क्वेश्चंस उसी में से हैं, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन. ये नहीं होती बुक्स कुछ भी. So, to preserve basic freedoms and dignity of individuals, a constitution should be permeated with constitutionalism. इसी में आगे लिखा हुआ है फिर उन्होंने, that it provides you that limitation of the governance. It provides you that pathway that you should adopt by keeping checks and balances from time to time. Right? That should be adopted. That should how a constitution can flow. That it can achieve its objective. जो preamble में हम notice करते हैं. Then what is constitution? Explain the said concept in both negative and positive aspect. So on this we have NW Barber now.
आई थिंक ये क्वेश्चन आया था 2015 समथिंग में, और उनका आर्टिकल आया था 2013 या 12 में. So just after he gave his paper, when he tried to explain and explore the positive aspect of constitutionalism, there was a question in the exam then and there. So उस sense में we need to understand constitutionalism, not just the negative one, but also the positive sense. What do you understand by the term constitutional conventions? Are they relevant in a country like India, having a lengthy written constitution with a particular preamble in itself? Now we know that yes, even if we have 470 or thousands of articles in the constitution, it can never, it is, you know, it is not something which can achieve everything, which can provide you for everything, for every circumstance, for every uncertainty that might happen. We always require some guidance from these practices, from these usage over time, that have so ingrained with the constitution that it supplements it from time to time. It has been impossible to resist the growth of conventions, constitutional conventions in India, though the constitution is a highly comprehensive document which pertains to every matter in utmost detail. कवर तो हमने यही सोचा था ना कि क्या क्या करेंगे, कौन गवर्नमेंट है ये बताएंगे, कैसे फॉर्म हो सकती है, क्या क्या राइट्स हैं लोगों के जो हमें प्रोटेक्ट करने हैं, क्या डायरेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, किस तरह की आपकी पार्लियामेंट होनी चाहिए, किस तरह की आपकी लेजिस्लेचर होनी चाहिए, कौन पार्लियामेंट का पार्ट होगा, कौन जुडिशरी होगी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कैसे सिक्योर करेंगे, जुडिशरी के टाइप्स क्या होंगे, उसके बाद जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है वो कैसे किए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कैसे किए जाएंगे. एवरीथिंग वाज कन्वेड ब्यूटीफुली. कुछ रह गया तो थोड़ा हमने और अटैच कर लिया कि चलो ठीक है, क्या जोड़ेंगे हैं बाद में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के बाद में जोड़े गए हैं अटैच करेंगे स्केड्यूल्स, राइट. उसके बाद में भी हमने स्केड्यूल्स करेंगे, नहीं बताएंगे हम विद एक्सेप्शनल क्लैरिटी. देयर इज कितना आपका पर्टिकुलर एक स्टेट है, कितना उसका एरिया है, वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है हमने इन डिटेल इन द स्केड्यूल इटसेल्फ. तब भी इवन देन कुछ ना कुछ गैप्स हैं जो रह जाएंगे, एंड दे विल ऑलवेज बी फुलफिल्ड बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड दीज कन्वेंशंस which supports the constitution in every way. So with this quote, if I find the constitution being misused, I shall be the first one to burn it. Let's close our session for the day. कोई doubt है, कोई question है in your mind? There's something you want to convey? Sir, हाँ जी. कोड ढूंढ रहा था. जस्टिस HR खन्ना ने नानी बल्कि वाला के लिए बोला था कि it was not बल्कि वाला who spoke today, it was divinity speaking. Yes, उसी में ही है, उस book में ही है. Yes, कोड ढूंढ. He just, you know, at the last moment, he picked that argument. कोई argument नहीं था उनके पास जब कोर्ट के अंदर घुस रहे थे उस दिन, और जबरदस्ती उनको लाया गया था क्योंकि पहला ही केस था जिसमें वो नहीं आ पाए थे. बाद में उस केशवानंद भारती केस में जबरदस्ती उनको पकड़ के लाया गया कि नहीं, you have to be here. And that day he spoke. इंदिरा गांधी ने भी कुछ बोला है ना. इंदिरा गांधी ने एक्चुअली, इंदिरा गांधी फर्स्ट अप्रोच नानी पालकी वाला that you represent us, and he denied. And from there, you know, that fight that broke between them, उसके लिए that's why he went into this particular case to argue. Otherwise नहीं करते वो. And he charged bare minimum, I think 2 or 3 पैसा or something for that, to be a part of केशवानंद भारती. Yes, बिल्कुल भारी पड़ गया. सर इस केस में जितनी पार्टीज इन्वॉल्व थी सब बहुत, मतलब इनफैक्ट द केशवानंद जी himself, he was his holiness. रिलीफ थोड़ा ही मिला है होलीनेस को भी. एक चीज नोटिस करना कभी, God's gift to India ऐसा हो गया लाने. वो इंडिया के लिए है, वो पार्टी के लिए. मिनरल मिल्स देख लो, केशवानंद भारती देख लो, कभी रिलीफ नहीं मिला इन्हें. They never got the relief that they sought. But हाँ, देश को मिल गया एक रिलीफ काफी हद तक. नहीं मिला उनके नाम से रेलिवेंट हो गया, जरिया बन गए एक नई मुहिम का. बिल्कुल ठीक है, चलो लो, लेट्स एंड द क्लास देन.